हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और आज की इस लाइव वीडियो जो कि हमें हेल्प आउट कर रहा है स्ट्रीम यार्ड, उसके थ्रू लाइव जा रहे हैं हम। और उसकी मेरी आप सबके लिए दुआ है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, आपके इर्द गिर्द रंग रोशनी खुशबू रहे, आपके दिल में उम्मीद का दिया जलता रहे और यकीन के साथ आप अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ते रहें। अभी हमें जो है हमारे कुछ फ्रेंड्स ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि मैंने वहाँ ट्रेनिंग थोड़ी सी कर दी है कि कुछ लोग हमें टाइम लाइन पे हमें देख पाएं, तो कमेंट्स आ जाएंगे बाद में। तो आज हम हमारे साथ बहुत ही खास, बहुत ही प्यारे से एक अच्छे से गेस्ट हैं। उनका नाम अमजद साकिब साहब है, और आप सॉरी अमजद परवेज साहब है, और हम उनसे गपशप करेंगे और आज की कन्वर्सेशन हम देसी स्टाइल में करेंगे। मेरा मकसद ये है आज की कन्वर्सेशन का कि हम उनके बारे में जान पाएं और उनके पास्ट के बारे में, उनके कामों के बारे में, उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में। तो हियर वी गो। हमारे साथ हमारे प्यारे से गेस्ट हैं अमजद परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम, जी कैसे हैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। I'm really well, and thank you so much for having me on your show. I've heard so much about the excellent work जो आप कर रहे हैं, particularly amongst the youth. So it's a pleasure to be here. Oh, thank you so much. And what I find you in our previous conversation is that like जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो पता चलता है कोई अंग्रेज बात कर रहा है, और जब आप पंजाबी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई कोई देसी पंजाबी बात कर रहे हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यू कि पता नहीं चलता ना। जी तुस तो जे तुसां जी जी, पंजाबी च गल करनी है तो पंजाबी च गल कर लो। ऐसी की गल है तुहाडी फिर। कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी। हाँ जी, मैं पंजाबी में बात करूँगी आपसे थोड़ी-सी एट द एंड ऑफ द शो। और ये साबित करती है कि आपकी अपनी ज़बान से और आपकी अपनी मिट्टी से मोहब्बत, कि आप जब इतनी दूर से होके भी आ गए हैं, एट द एंड आप पाकिस्तान दोबारा आए हैं और दोबारा कुछ करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। पर आप जब बात करते हैं तो वो आपकी वो जो खुशबू आती है ना लैंग्वेज की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने बहुत कम जो अब्रॉड गए हैं उनको सुना है कि वो फिर अपनी लैंग्वेज को भी जिंदा रखते हैं। यू आर वन ऑफ देम। आई एम प्राउड ऑफ यू। जी जी जी, शुक्रिया। एक्चुअली तो लेट्स बिगिन। सो मैं बचपन मेरा मेरे वालिद साहब जो थे वो ब्रिटिश एम्पायर आर्मी में थे, और 1947 में वो पाकिस्तान आर्मी में आए। फिर 1950s में वो यूके चले गए। सो आई लेफ्ट पाकिस्तान इन 1969। तो वो लंदन में हुआ करते थे, मगर वो जब हम वहां पे पहुंचे तो वो हमें ब्रैडफोर्ड ले गए, क्योंकि ब्रैडफोर्ड में वो आप जानते हैं कि उसे लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है। तो वहां पे पाकिस्तानी पॉपुलेशन कुछ ज्यादा थी। तो आई थिंक ही थॉट इट वुड बी गुड फॉर अस एज चिल्ड्रन to be amongst our own people. So we moved to Bradford after 2 years living in London. So to move on, मैंने graduate 1983 में किया. I worked in financial services. I specialize in marketing, branding, and communications. Uh, but I actually didn't find life in the corporate world as exciting जो कि होनी चाहिए थी. So I set our family company up in 1984. Uh, we, Alhamdulillah, built that company. Today, it directly employs 700 people plus people in UK and thousands across the globe. It's probably one of the largest food service companies in UK. But उसके दौरान I did a lot of work on strategy, particularly government के साथ मैंने education, enterprise, urban development पे काम किया. और एक ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट की, ATL, एशियन ट्रेड्स लिंक, इन 2000. उसका मकसद ये था कि जो हमारे नौजवान यूके में पाकिस्तानी ओरिजिन है, रादर देन एक्चुअली किसी के लिए काम करें, वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चले जाएं.
तो उसमें उस वक्त इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्रिकेटर थे, आपको पता है, फेमस क्रिकेटर थे। तो हेडिंगले लीड्स में क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था, तो ही यूज्ड टू कम देयर. We got to know him, and in the background we did a lot of work. I sit on Bradford University's court. So myself, Adiba Malik, and Muhammad Ali from another organization called Quest for Educational Development mooted him to become Chancellor at Bradford University. So we did a lot of work with him around Namal College, developing that, and Bradford University. So मैं इसलिए ये नरेट कर रहा हूँ कि आई एम नॉट जस्ट एंटरप्रेन्योर, मगर जब आप अल्लाह आपको इज्जत देता है, आपको वेल्थ देता है, तो आपको कुछ सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए. So whilst I was doing that with the help of my family, we worked tirelessly to uplift the people, not just Pakistanis, but whole of the community there as well. मगर देखें वो क्या कहते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा. It doesn't really matter, कि आपके पास पैसा है, you have profile, you move in elite circles, but I think all overseas Pakistanis, जितने भी overseas Pakistani, उनमें एक commonality है. When you actually cut them open, उनका जो दिल है ना, उसमें आपको ग्रीन एंड वाइट ब्लड नजर आएगा. And I think if you look across the times, when Pakistan has needed, whether it's natural disasters, चाहे economic calamities हैं, and even now, as we sit in middle of one of the biggest pandemics that the humanity has ever seen, overseas Pakistanis are doing their bit to help their fellow Pakistanis in Pakistan. मैं दुनिया भर मैं अपने काम के लिए ट्रैवल मैंने किया है. मैं बड़ा आई एम वेरी लकी कि मैंने हर कॉन्टिनेंट पे जो पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं उनसे मुलाकात अपनी ज़िंदगी की ट्रैवल्स में की है. But I have not met a single Pakistani who does not want to invest in Pakistan. This is a fact. But I think पिछले 30 decades में हुआ ये है कि अल्लाह ने हमको resources दिए हैं. But I think what we've not had, or in fact we've had the misfortune of mismanagement. So I think sometimes you plan something else, but Allah wants you to do something else. So in 2017, लंदन में केंसिंगटन में एक कन्वेंशन हो रही थी, डिनर हो रहा था. So somebody asked me to come and speak there about about the work that I've been doing with the governments there, and ये जो social enterprise है और enterprise in education. I stood up and normally जो हमने काम वहाँ पे किया था लॉर्ड यंग के साथ on ये जो नया दौर चल रहा है टेक्नोलॉजी का, जी ये जो डिसरप्शन आ रही है, ये जो आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो तब्दीली वहाँ पे आ रही है. So I delivered a very brief kind of lecture. But to my surprise, a young man got up after me and said that जो अमजद बात कर रहा है कि हम लोगों ने ये किया, ये कर रहे हैं यूके में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काम पाकिस्तान में कर रही है. उस यंग मैन का नाम था खुरम जुबैरी, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड जंप स्टार्ट पाकिस्तान. तो मैं जो मेरे होस्ट थे, मैं उनके टेबल पे बैठा था, तो आई सेड टू हिम, लोग कैन आई
be excused because I want to speak to this young man. A, I don't believing. B, for this to happen in Pakistan is literally impossible. So believe me, we spent the night, me and Khurram, talking about Jumpstart Pakistan and what they were doing. And finally, I think about 3 o'clock in the morning, he said, "Look, Amjad, I can't explain anymore. अगर आपने ये काम देखना है तो आप चले आए पाकिस्तान चले आए." So in 2017, I think it was August or September, I came to Pakistan, had a look at what Jumpstart was doing in the universities, particularly around startup culture. I was really impressed. The thing that really struck me was the young people, unki enthusiasm, their hunger to succeed, and I think their mannerism in terms of respect for humanity. I was really touched by those elements. So I said to Khurram, what you're doing is fine, but right now, Pakistan ki सूरत हाल ये है कि we're at a cliff's edge. This is 2017 की बात है. स्टार्टअप कल्चर तो ऐसा है कि स्टार्टअप शुरू करती है अपनी जर्नी तो कम से कम 3 साल लग जाते हैं, right? And then to grow into a medium-sized company and a large company, it is a journey of probably about 10 to 15 years. Pakistan simply hasn't got the time. We're borrowing money left, right, and center. We've got circular debt. Our education system is defunct. If you look at our infrastructure, it's not exactly in good shape. And the key driver for wealth creation is the SMEs, small to medium-sized enterprises. And what we need is to actually focus on them because they're the backbone of the economy. So he said, look, I met the board of Jumpstart Pakistan, did my presentation in terms of what needed to be done. And they said, look, we haven't got the expertise. What we're doing is what we're doing. And then 3 months later, actually, Khurram Bhai Joanna, he came to see me in Bradford. And he said, look, we're interested in this ecosystem of enterprise that you're talking about. And what we want you to do is we want you to lead the organization. Actually, I had promised myself at the age of 50, I would retire and do something worthwhile and put something back in the community. So I said, give me a couple of weeks, let me think about it. And then, alhamdulillah, I'm honored to have accepted the chairmanship of Jumpstart Pakistan. आपको पता है कि 2018 में हमने लिफ्ट पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस की और फिर 2019 में 3 दिन हमने लाहौर में किए और 4 दिन हमने इस्लामाबाद. Over 20,000 people from across the globe came. And I think there बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं इसके ऊपर. मगर मैं समझता हूं कि एक कमी है वो ये है कि देयर आर टू मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्रॉस कोलैबोरेशन जो है ना राबिया वो नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है in terms of capital, in terms of brain power. And I'll tell you what I mean by that. देखें, our population is 60% youth. Everybody says that. Do you know what percentage of our youth go to university? Take a guess. Maybe it like 5%. Maybe I don't know exactly. Okay, well, most developed countries, Rabia, वहाँ पे 50 to 60% of the population goes to university, right? Sadly, in our case, I've been reliably told by some of the largest universities, private sector university chairmen,
because we work with about 50 universities very, very closely. Uh, Between 2 to 4% of our population actually goes to university. And of those 2 to 4%, nearly 20 to 30% drop out. So we're a developing country that has to catch up to the rest of the world. And the rest of the world is educating 60% of their youth to a degree level. And we're a developing nation. We need to be doing a lot more in order to just catch up. So there's the dilemma. और उसके बाद एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे 2% या 3% बाकी बच जाते हैं ना, जो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, उनमें से जो टॉपर्स हैं, यानी वे दोज पीपल हु गेट अ फर्स्ट क्लास डिग्री और अ 2-1, what happens to them is that the big corporates, the multinationals like Nestle and so forth, they take them. And after probably about 4 or 5 months of training, होता ये है कि वो they get moved overseas. So fundamentally, what is happening? We're losing the top brains in the country, who could be the strategists, who could be the academics, who could be the planners, who are the engines of the society. So when we face these kind of issues, we really need cross collaboration. So I think one of the reasons why I've decided to spend a lot more time in Pakistan is because if you are giving advice, or if you're preaching something, अगर आप कुछ बात कह रहे हैं, so then you have to act on it. And I think currently everybody is talking about the coronavirus. And everybody's talking about self-isolation. Everybody's become an expert all of a sudden on coronavirus, which is pertinent, which is wise. But I think what we're not talking about is what the post-world, post-corona will look like. And I think it is this that is the key to our future. Pakistan, as everybody keeps saying, has a huge potential. It has huge resources. But where is the economic strategy? Where is the social strategy? Where is the urban regeneration strategy? If coronavirus has taught us anything, it is that we need a healthy society. We need an excellent supply chain of food. That means agri-tech. And अगर खुदा न करे कोई प्रॉब्लम आ जाए जैसे आ गई है, then we need technology. We need to be leaders in technology, because not only do you need physical infrastructure to get the farmed, good quality food to people, you need the infrastructure. You need railway network, you need road network. And actually, one of the biggest things that we must learn from this coronavirus is that it's attacking those people who have underlying health problems. So healthy living, who is actually doing preventative strategies in terms of teaching self-health care in schools? So these are the key things, I think, that people like me who are overseas, मैं ये नहीं कह रहा कि जो बाहर के ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो सब कुछ जानते हैं और आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं कुछ नहीं जानते. It actually is a cross collaboration. I am a fish out of water, Rabia. जब मैं यहाँ पाकिस्तान में आता हूँ, मुझे तो सिस्टम का पता ही नहीं है. So I need people like you. So actually, I see you as my mentor when I come to Pakistan. So I think together, inshallah, as good Pakistanis, अगर हम आपस में मिलके काम करेंगे,
There is nothing that we cannot overcome. Allah has given us the resources. We just need to work together. But the key thing is we need the strategic objectives. We need the key priorities. We need planning regimes that actually have long-term vision. One thing मैं आपको राबिया कहूँगा, we have a little problem as a society. We need to actually stop ये जो हम politicians की cult worship करते हैं ना, इसे हमने stop करना है. I don't know of any politicians who actually create wealth and employment. It is the private sector that does that. The job of any government is that they create an environment, an enabling environment where their people can flourish. Whether you're an artist, whether you're a technologist, whether you're a teacher, whether you're a doctor, whether you're a business person, you need an enabling environment. The government should not interfere in everything in the lives of the individuals. I think this is the fundamental difference that we need to bring to Pakistan. It is the citizen and is their creativity, उनकी जो creativity है, उनकी जो innovative mind है, वो हमने सामने लाना है, उसको हमने improve करना है. Imagine कि the whole population that we have through our education system, through the way we teach them the skills, becomes innovative and creative. We would have an explosion of wealth creation. So I think I've said enough. So I don't know whether you want to question me on anything. Okay. Firstly, I want to say that well deserved that you choose Jumpstart. Like आपको उसमें potential नजर आया और आप इतने अच्छे तरीके से आपने इतनी दो जबरदस्त कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं. सेकंड 2019 वाली तो मैंने अटेंड किया एंड एक चीज you think about it and then you see it in front of your eyes. So I am like उसके बाद तो मैं खुरम साहब की वैसे फैन हो गई हूँ कि like he is good in execution and he has very good people around himself. और मुझे खुशी है कि आपने किया और आपने अपनी कंपनी जो बनाई उसको इतना स्केल करके लाइक अगर 700 एम्प्लॉइज आपके साथ काम कर रहे हैं और बाकी दुनिया से भी लोग काम कर रहे हैं, सो पीपल कैन लर्न फ्रॉम यू सो मच कि कैसे वो कर सकते हैं कुछ. तो ये सारा कुछ अब दिल में वतन की मोहब्बत और एक पंजाबी दिल लेके दोबारा पाकिस्तान आए हैं और आपके फ्यूचर गोल्स ये हैं कि आप यहाँ एक फार्मिंग के लिए, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी. हाँ, देखें जो जंप स्टार्ट पाकिस्तान है ना, we actually realized very early. We met a lot of ministers in the government. For once हमने ये देखा कि गवर्नमेंट जो है वो लिसनिंग मोड में है. They were in a listening mode to anybody with good ideas. And I think one of the key things that was lacking in Pakistan was an industrial strategy. So what we've done as an organization, हमने एक industrial strategy create की है that is based on sectors. Excuse me, I'm just gonna have a drink. That is based on sectors. So currently हम ये कर रहे हैं कि there are about 10 sectors जो हम choose कर रहे हैं. उसमें learning and education है. So LIFT actually stands for learning and education. I is for innovation. F is for funding and finance sector. T is for technology. And then in 2019 conference, Rabia, you'll have noticed that we added aerospace engineering. उसमें हमने create की also tourism
agri-tech. Now, because I'm related, bulk of my life I've spent in food processing, also supply chain management in food across the globe. So farming and food have been part of my life. So I took a special interest in that. But apart from that, the other sectors जो हम प्रमोट कर रहे हैं उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल्स हैं, और सबसे जो मेरे ख्याल में बेहतरीन सेक्टर है वो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज का है, जिसमें रेडियो, टीवी, आपका फूड आ जाता है, आपका लिटरेचर आ जाता है, आपका म्यूजिक आ जाता है. सो सॉफ्ट कल्चर इज समथिंग that we should be promoting. But if you look at the map of Pakistan, through its spine, at the top of Pakistan, we have the mountains, and the rivers, the 5 rivers, meander through Pakistan. So we have probably 6 seasons. The seasons our climate starts from freezing in the Sanchin glaciers. Then when you come into the northern areas, it's almost like European seasons, and then you come into our area of Islamabad, Lahore, Gujarat, Jhelum. Here you have winters which are okay, around about 3 degrees, summers that are around about 40 degrees. So you can grow tropical goods here. When you move down further towards Sindh, you get desert, and that's got its own coastline, seafood, so forth. But actually, I think when you look at the geography, the seasons, and the 5 rivers flowing through Pakistan, right? That is our most competitive advantage, agriculture. I personally believe that not only can we feed Pakistan, I think Pakistan, if we have the right strategy and if we have the right route to market. Now, what do I mean route to market? There are over 10 million overseas Pakistanis across the globe in some of the most developed economies, right, in the world. दुनिया में हर में sorry, somebody's ringing me. I'm going to have to decline them. So some of the most best markets in the world, we have Pakistani businesses operating there for the last probably 50 years. Now, in the food industry, I mean, if I give you an example of UK market of food, the fresh produce, the independent fresh produce is actually controlled by Pakistanis. So I am so happy to listen the learnings and the things that he is sharing. Our guest Amjad Parvez साहब, आप चेयरमैन हैं जमसा के. इसके अलावा आप उनके प्रोफाइल पे जाएं और तो आपको उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. उन्होंने अपना एक बिजनेस ग्रो किया है और सी फ्रेश आई थिंक उनके ब्रांड का नाम है, और वो पूरे जिस तरह बता रहे हैं यूके में 700 एम्प्लॉइज उनके अंडर काम करते हैं. इसके अलावा पूरे दुनिया में हजारों हैं. सो एक ऐसे इंसान इनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से बाहर एंजॉय कर सकते हैं और वहां रह सकते हैं. इफ ही इज विलिंग टू सर्व his nation because he has passion to serve his country, then we have to listen and acknowledge that, and we have to connect. Okay, we have to connect, and yes, he is here. We have to connect with them as well. So it's okay.
Okay, so I was saying, so the bulk of the distribution in the wholesale and retail sector is controlled by the Pakistani businesses. Now, I think what we've not done in the past is actually engage them with the industries in Pakistan. So this sector-based approach that we have is we're encouraging overseas Pakistani businesses to enter ये जो सेक्टर्स हमने क्रिएट किए हैं ना उसमें वो हम उनको ला रहे हैं और यहाँ जो पाकिस्तान में सिमिलर सेक्टर्स में इंडस्ट्री है उसको उनको हम कह रहे हैं कि इन सेक्टर्स में आप आए एंड जब दो बिजनेसमैन आपस में बैठते हैं एंड दैट डजंट हैव टू बी बिजनेसमैन इट कुड बी बिजनेस वुमेन एज वेल वी मस्ट encourage the women of Pakistan to take leadership and play their roles, active role in all spheres of life. And fundamentally, what we're finding is through this, हमें हमारा एक ही फोकस होना चाहिए for the next 10 years, that Pakistan needs to create the best value chain of competitive goods and services. So अगर आप examine करें, if you look at the rise of Malaysia, if you look at the rise of Turkey, China को देख लें, India को देख लें, Israel को देख लें, in the last 20-30 years, the nations who have emerged, उन्होंने पहले फोकस किया है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज वो क्रिएट कर रहे हैं वो ग्लोबली कंपेरेटिव हैं और क्वालिटी में कंसिस्टेंट है. So these two factors will allow us to enter the global markets. Actually, we have the greatest advantage क्योंकि already overseas Pakistanis हैं जो who are dying. They literally, right, are dying to work with Pakistan. We simply need the leadership to adopt this culture. And I'm glad to say this, the current government is actually doing a lot of work. But Rome wasn't built in a day. So we've got to give them a chance. I know there's a lot of criticism that, there was high promises and, hardly anything is being delivered and they're taking too much time. A normal company from a startup to a large corporation takes 10 to 15 years. Look at Twitter, look at Facebook, look at any company, right? It will take you a life journey. But when you talk about a nation, how on earth, कैसे हो सकता है कि 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में? This is a 15 to 20-year journey. And we Pakistanis need to learn to be patient. And yes, we need to hold our governments and our officials to account, but we need to be informed citizens. And I think this is the way forward. And I think people like me have a role to play, a positive role, I hope, कि आप जैसे intelligent young leaders जो हैं उनके साथ, मेरे जैसे middle-aged people, maybe we can pass something to you and maybe learn something from you. We need to be open-minded. So that is why I'm here. जो मेरे अपने goals हैं वो देखें, वो तो मेरे अपने goals हैं, वो तो सभी के अपने goals होने चाहिए. I think what is at this hour of need of Pakistan, we need to put our personal goals to one side and see where do my goals, जो मेरे अपने personal goal हैं, उनको कैसे मैं अपने जो नेशनल गोल्स हैं उनके साथ मैं कैसे अलाइन कर सकता हूँ. एक्चुअली इफ वी डू दैट विल बी वंडरफुल. सही, जबरदस्त हो गया. अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस दफा माशाल्लाह जो मतलब आपकी जो सेकंड एफर्ट थी लिफ्ट पाकिस्तान 2019 वो ग्रेट थी. आप खुद बता रहे हैं कि 20,000 पार्टिसिपेंट केम और इतने सारे लोगों को आपने एंगेज किया, पूरे आप सबने एंगेज किया, पूरे बाहर के लोगों को भी एंगेज किया. तो इस साल जो है वो 5 सिटीज में होने जा रही है. सो टाइम उसमें मुझे लगता है कि ये जो हालात हैं, सो ये इनका भी सामना है. सो हाउ यू आर प्लानिंग एंड डूइंग वर्क ऑन दैट? ओके, देखें, जिंदगी में चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं. इफ इट्स नॉट कोरोना वायरस,
तो कुछ और हो जाएगा। पहले वॉर ऑन टेरर थी, अब ये आ गया, ये खत्म हो जाएगा होगा तो कुछ और आ जाएगा। To be honest with you, one needs to take a very pragmatic approach to life. ये challenges are there for leadership to rise to the occasion rather than say कि ये हुआ ये हुआ। देखिए ये जो सेल्फ आइसोलेशन आ रहे हैं, ये जो लॉकडाउन्स हो रही हैं, इसके पीछे भी एक मतलब है। So we need to be actually aware of what's happening. But the vision of Jumpstart Pakistan and Lift Pakistan is not 2 years. It's a generational thing. People like me will set the foundations. People like Khurram set the foundations in 2014. Actually, it's not my organization or Khurram's organization. Let me make it absolutely clear. One of the reasons why I joined the organization is that we need to learn devolved leadership development. So what do I mean by that? देखिए, अगर मैं ही कहूं कि अमजद परवेज चेयरमैन है जम्पस्टार पाकिस्तान का और खुरम फाउंडर है और सीईओ है, और हम किसी को कोई और पोजीशन नहीं देते, किसी को एक ऐसी स्पेस नहीं देते जहां पे वो फ्लरिश नहीं कर सकते, देन वी हैव फेल्ड। सो फंडामेंटली ये जो सेक्टर बेस्ड पॉलिसी है उसका काम ये है कि I know a little bit about food, I know a little bit about strategy. Do I know anything about technology? Not a lot. Am I an expert in health? No, I'm not. Am I expert in textiles or green technologies? No, I'm not. So जो leadership होती है वो they actually find people better than them. That's the key thing. My job and my team's job and everybody who joins the organization, हमारा काम ये है कि जो दुनिया भर में पाकिस्तानी है, जो मुहिब्बे वतन है, जो इस मुल्क को सर्व करना चाहते हैं, उसे एक स्पेस दी जाए जहां वो where they find an environment to flourish. When they flourish, then the nation will flourish. So whether it's the coronavirus or whatever challenge, the work of Jumpstart Pakistan must continue. It will continue. It doesn't mean just because coronavirus has come and then we stop. We are doing work. अभी हम लोग काम कर रहे हैं. देखें, I've chosen not to live in a city. I live in a tiny village near Dina. It's a rural village. And I need to get this to the people out there who live in these what I call the bubble cities of Islamabad, Lahore, and Karachi. They live in their own environment. मगर उनको ये समझना चाहिए कि जब आप जीटी रोड से उतरते हैं, that you get dirt roads, you have no sanitation, there is no waste management, there is no health system. जो फार्मिंग सिस्टम है वो नियांडरथल एजेस में है, yet you guys want cheap tomatoes and cheap oranges, but you don't want to give any help to the farmers. You look down on them. I think our whole attitude really needs to change, that every person in our society contributes, so they need to be respected. जब तक हम आप लोग हर इंसान को इस मुआशरे में रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो ये नेशन कभी नहीं बिल्ड हो सकती, राइट? सो आई हैव चोजन एक्चुअली, सो व्हाट हैज हैपेंड विद दिस लॉकडाउन, जो बेचारे अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, हमने ये इब्तिदा में ये बात शुरू की राबिया कि only 2%, 4% of the people go to university. So what happens to the other 92% of the 60% of the people who are under the age of 30? And your economy is not, आपकी economy grow नहीं कर रही, आपके SMEs नहीं grow कर रहे, तो ये जो population growth जिसकी ये forecast है कि 2050 में पाकिस्तान की population double हो जाएगी. So where are they going to get the jobs? Your biggest sector is your agri-tech sector, and nobody even gives a damn about it. So I've deliberately chosen to actually live in a village where I don't know anything about agriculture. I know about food, I know about food processing, I know about
how standardization takes place in food, but I'm not right. So what I'm at the age of 61, I'm actually learning about livestock. I'm learning about how to grow plants, right? I'm learning about cash crops. I'm learning about, medicinal herbs, right? Stuff that is not even grown in Pakistan. How can we export it and get revenue into Pakistan and grow companies? So that's the reason I've chosen to be in Pakistan and in a village rather than in a city. I hope that answers your question. Yeah, that's great. Okay, so I hope that जो लिफ्ट की कॉन्फ्रेंस इस साल होने वाली है वो भी जबरदस्त रही। इस दौरान मैं कहूँगी जो व्यूअर्स हैं अगर देख रहे हैं कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं अमजद साहब से, तो लिफ्ट कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी ना कितनी जबरदस्त रही है, तो ये जो है ना आप उस हवाले से भी सवाल कर सकते हैं और इसके अलावा दूसरे आपने सुना प्रोग्राम दूसरे हवाले से भी सवाल कर सकते हैं जो आपको समझ आए। अच्छा, ये तो जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। तो एक और जो इनिशिएटिव है इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, आई गेस। जी जी, देखिए कॉन्फ्रेंस तो सभी कर सकते हैं, मगर उस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि इन द नेक्स्ट 10 years we want to actually create economic activity of $100 billion, not 100 million, $100 billion. Okay, fine. So how will that happen? Well, that can only happen when you identify in each sector the SMEs who have the potential to grow, right? But imagine कि हम आपके चेंबर्स ऑफ कॉमर्स उनके साथ काम करते हैं, प्लानिंग कमीशन के साथ काम करते हैं, FBR के साथ, नादरा के साथ, right? We find out these what I call peak performers in healthcare, in agri-tech, in tourism. मगर फिर उनके साथ क्या करना है, right? What we have to do is, number one, find out what is it that's stopping them grow. Is it lack of funding? Is it lack of management skills? Is it lack of adoption of technology? Is it lack of understanding of global market dynamics? So what we are trying to do, this conference, inshallah, that would have taken place now. Actually, our schedule was for it to happen now, but obviously because of this, it will happen some other time. But it will, inshallah, happen. That doesn't mean to say that we stop looking for those peak performers, जो wealth creators होंगे, जो disruptive होंगे. So we're currently searching for those people to come forward. So if there are people listening who've got companies in these 10 sectors, they're more than happy for them to come forward. So what we want to do with them is do what I call a health check. So we would basically have a questionnaire on management, on product features, on staff training, human capital development. So जब हम उनको when we do this needs analysis or this health check, it gives us precise point where we can give them training. अगर investment की जरूरत है तो there are people who can invest in it. If they need mentoring, if they need access to markets, then जो हमारा network है in 30 countries, we could actually link them with them and get them route to market. So this is how investment in Pakistan. So Lift Pakistan is a branding organization जो highlight करती है कि ये opportunities हैं पाकिस्तान में। मगर जो इन्वेस्ट इन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद ये है कि विच आर द कंपनीज इन पाकिस्तान दैट आर एक्चुअली एक्टिवली वर्किंग, जिनमें पोटेंशियल है. सो दिस इज प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट टू ग्रो द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान.
So that is what invest in Pakistan means. Okay, that's great, and that's very good. It means that this is the next step after the conference, that how should you will do your work. अच्छा, मुझे पता भी नहीं चला और हमें 1 घंटा हो गया आपसे बात करते हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि जी Rabi, can I leave a question for the viewers? Okay, so Jumpstart Pakistan अपनी जगह काम कर रहा है, लिफ्ट पाकिस्तान अपनी जगह काम कर रहा है, आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, पाशा अपनी जगह काम कर रहा है, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जहां बैठे हैं, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस फैमिली में, आप क्या कर रहे हैं? टू फर्स्ट लिफ्ट योरसेल्फ, देन टू लिफ्ट योर सराउंडिंग एरियाज। आप अपने रिश्तेदार ही ले लें, दूसरों को छोड़ें जी। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि क्या डू यू एक्चुअली मीट एज अ फैमिली, एज अ क्लैन, कुंबा जैसे बरादरी कहते हैं ना, डू यू एक्चुअली मीट एज अ बरादरी एंड से look, how can we pool resources, talent first, how family, how many technologists are there, how many people are solicitors, right? So actually do a mapping exercise of the human capital that you have, right? Then look at the opportunities as a bradri, what you can do, right? And then look outward. So rather than trying to jump on what UK or US or everybody else is, हमने देखना है कि मेरे गांव में क्या मेरी गलियां साफ हैं? ये एक प्रॉब्लम है ना जी, इसको कैसे हल करना है? क्या हमारे पास सैनिटेशन है? हमारे पास फील्ड्स हैं, फर्टाइल फील्ड्स हैं, उनमें जरूरी है कि हमने मैंगो ही ग्रो करना है या किन्नू ही ग्रो करना है? Can't we do blueberries? Can't we do cranberries? Can't we do basil? Can't we do ginseng? Right? And in other spheres, what is it we can do, right? With fashion, what is it that we can do with music? Everything that you see and feel is creating wealth and employment. Why is it, this wage cage mentality? इससे हमने बाहर निकलना है और हमने एंटरप्रेन्योरियलिज्म में जाना है। अल्लाह ने हमें इतने रिसोर्सेज दिए, प्लीज देखें, don't wait for the government to do anything for you. They haven't got the money. You have to do something for yourself. Imran Khan and his ministers aren't going to come and clean your streets. They're not going to actually create the sewage system. They are not necessarily going to tell you what, go on YouTube, go on Google. The world's information is at your hands. Who you're waiting for? So I think that's my message to end. If people have got any questions, I'm more than happy. I'm here in Pakistan at the moment. Just get away from this corona mindset. Think ahead. The future is bright. 60% of the population is youth. The coronavirus doesn't attack the youth. And in fact, they are super carriers. शुक्रिया। आ गया मुझे आज सारी कन्वर्सेशन सुन के, and it makes me more motivated, like how should we do as a youth, तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा आपको इनवाइट करूंगी एक और टॉपिक पे बहुत जल्द। For now, thank you so much. It's a real privilege to listen you, to learn from you. God bless you. Thank you जी। Allah Hafiz. Good night. Allah आपको खुश रखे। Same to you. चलें, आपका मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उम्मीद करती हूँ जो देखने वाले होंगे उन्होंने लर्न किया होगा। जिंदगी का सफर जीरो से जब आप स्टार्ट करते हैं, सो ये जस्ट आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, आपने इरादा करना होता है और वो स्टेप लेना होता है। बाकी जर्नी आपकी स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद रिवील करती है अपने आप को। बट हाँ, आप जरूर ये सोचें कि आपने ऐसे लोगों से जरूर जुड़ना है जो कि उसमें एक्सपीरियंस रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, ताकि आप उसमें सवाल करके उनसे सीख सकें, उनसे इंस्पायरेशन ले सकें, मोटिवेट खुद हो सकें। ढूंढते रहें, मिलते रहें ऐसे लोगों से और बात करते रहें और सवाल करते रहें, ठीक है। एट द एंड मैं इस बात का इख्तिताम करूंगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।